Namaste, welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to it. There is a bell button right over here. Please click this and you'll be notified every time I upload a video. So in today's video, you can see I have done this pretty pinky look, which is quite simple but looks elegant and polished. I have done this day makeup look, like you can wear it in the night time also. But I feel for the daytime, most of the people are quite prone to go for the daytime look. So I thought of doing this daytime look where I'm having these pink lips. Although I have tried two shades and I'll be showing you both of the shades, how they look and how you can wear them. So this look has just taken, I feel, 15 to 20 minutes or maybe less than that if you are handy with makeup. If you want to know how I got this look, please keep on watching. Alright, तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। और क्योंकि हमें इस दिन थोड़ा सा फ्लॉलेस दिखना है, ऑब्वियसली आप फ्लॉलेस नहीं हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा सा पॉलिश लुक आए, तो मैं अपना पुराना लैक्मे ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ करूँगी। इसकी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, वही इनफ होती है, आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। इट गिव्स अ वियर्ड साउंड, जब भी इसको निकालो ना तो एक वियर्ड सा साउंड आता है इसमें से। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। ट्राई टू कवर योर टी जोन, बिकॉज वहीं आपका सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और वो अलग से दिखता है और आपका जो मेकअप है वो ब्रेक हो जाता है। Be very light with your hands, very light with your hands. Now today, before applying my foundation, I need to cover my pimple marks and do some concealer over it. बिकॉज आई वॉन्ट कि वो ऊपर से ना दिखे, अंदर से दिखे। मीन्स जो आपका फाउंडेशन है वो क्लीन लुक दे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आपकी कवरिंग है चीज़ों की हाइडिंग की, वो आप पहले कर लो। तो हम वही आज पहले करेंगे। नाउ फॉर द कंसीलिंग एंड करेक्टिंग पार्ट, आई एम यूजिंग दिस corrector palette, and this has these 3 shades. Green is for pimple, and then orange is for your pigmentation, and then this is the concealer shade. Although ये थोड़ा सा अजीब शेड है, कुछ येलो टोन है, बट ये चल जाता है। तो मैं पहले यूज़ करूँगी ग्रीन शेड। मैं पहले अपने पिम्पल्स मार्क्स पे उसको अप्लाई करूँगी। ये जितनी भी रेडनेस आपको दिख रही है, ये सब कवर हो जाएगी। तो ये जो ब्रश इसके साथ है, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लेना है और इसको उस जगह पे पैक करना है। ये लगाने के बाद इसको हल्का सा ब्लेंड करना है, ताकि कहीं पे भी पैचेस जैसा ना रहे। आई नो अभी पूरा ऐसा कलरफुल लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये सब कुछ कवर होने वाला है जब हम इसको कंसील करेंगे। नाउ फ्रॉम द सेम पैलेट में ये कंसीलर वाला शेड लूँगी और इससे अपना पूरा ग्रीन इसको कवर कर लूँगी। एंड अगेन आई एम यूजिंग द सेम ब्रश। इसमें अच्छे से लेना है इसको, क्योंकि हम वैसे भी इसको बाद में दोबारा से ब्लेंड करेंगे। तो आई हैव टेकन द कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। डोंट वरी अबाउट कि ये ज़्यादा लग रहा है या लेयरिंग लग रही है, बिकॉज ये सब कुछ जो है ब्लेंड हो जाएगा। आई एम लुकिंग लाइक अ मेस राइट नाउ। Moving forward for the foundation, and I will not use combination today, and that's why I have corrected and concealing before foundation. I'll be using only my Sugar Drop the Base foundation. It gives a very nice natural finish to your skin, doesn't look cakey, and it is so flawless on your skin that it is just almost looks like as if this is your skin. तो हमें वहाँ पे if you are going for a Valentine date like that, तो ज़्यादा केकअप जितना हो सके उतना नेचुरल दिखे और हाइड्रेट दिखे, तो उसके लिए ये बेस्ट है। मेरे लिए, मेरी वाली स्किन पे ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड लाइक आई ऑलवेज डू, शेक इट बिफोर यू यूज़ इट एंड देन
I will take 4 drops like I always do. 1, 2, 3, 4. And it is hell watery. It is so watery. Yes. Now I am taking my sponge and I am going to blend everything. Now as you can see, everything is nice and blended, and I am not a very full coverage kind of girl. I always go for medium coverage with natural finish, so this is fine for me. And if you want, you can go for second layer obviously, but I am just ending this right here. Next is the contouring, and before going to my powder contour, I will be going for my cream contour, and for that I'll be using my same NY Bay contour stick. This is in the shade 14 chestnut, and this is how it looks. Time for the powder, and for powder I'll be using my Fit Me Loose powder. This is in the shade 30 medium moyen, and I'm going to apply this and come back. Now our powder is also done, और आज हमको पहले आईज पे ध्यान देना है, बिकॉज मैं थोड़ा सा शिमरी और थोड़ा सा प्रिटी आईज करना चाहती हूँ, बिकॉज आई विल बी फोकसिंग ऑन माई लिप्स लेटर. उसके लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, एंड दिस इज़ फ्रॉम द रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन लंदन. दिस इज़ इन द शेड रीलोडेड न्यूट्रल्स 2. ये मैंने आपको पहले भी दिखाई होगी अपनी वीडियो में. बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं, पिगमेंटेड है, ब्लेंडेबल हैं, एंड एवरीथिंग इज़ नाइस अबाउट दिस पैलेट. तो आई विल बी यूजिंग दिस गोल्डन प्रिटी शेड, दिस golden pretty shade with some of this pinky shade, because वैलेंटाइन में पिंकी थोड़ा सूट करता है, तो मैं इन दोनों शेड को यूज़ करूँगी. एंड फॉर दिस आई विल बी यूजिंग माई फिंगर्स, बिकॉज जो शिमरी फ्रॉस्टी शेड्स होते हैं वो फिंगर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो पहले मैं ये गोल्डन शेड लूँगी और इसको अपनी पूरे लिड्स पे अप्लाई करूँगी. सो दिस इज आई हैव टेकन. I will use the same shade for my inner corners and my brow bone. अब मैं ये दूसरा पिंकी शेड ले रही हूँ सेम वे फिंगर्स पे, और इसको मिडल ऑफ द लिड अप्लाई करूँगी. रिपीटिंग दिस टू दिस आई. मैं आईज पे और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस एक थिन लाइन दूंगी मैं आईलाइनर की, जिससे आईज डिफाइन हो. एंड देन विल डू सेपरेटली आर मस्कारा एंड माई आईब्रोज. लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ अपना लैक्मे इंस्टा लाइनर. फॉर आईब्राउज हम यूज़ करेंगे स्विस ब्यूटी के शेप माई ब्राउज. दिस इज इन द नंबर 1. इसमें 3 शेड्स आपको मिलते हैं, एक ब्रश भी मिलता है एंड वैक्स भी होती है, और ये इट्स क्वाइट डर्टी क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ. मैं इसी से अपने आईब्रोज करती हूँ, एंड आई डू दिस एंड कम बैक, बिकॉज ये सारी वीडियोज़ में मेरा सेम होता है. तो आप चाहो तो मेरी दूसरी वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं. सो माई आईब्रोज आर ऑल्सो डन. नेक्स्ट इज ओनली लेफ्ट विद माई आईज इज मस्कारा. तो उससे पहले मैं इनको कर्ल करूँगी. कर्लिंग के लिए कोई भी आप नॉर्मल आपका जो इफेक्टिव कर्लर हो उसको यूज़ कर सकते हो. प्रोसेस इज सेम. 6, 7, 8, 9, 10. और राइट तो मस्कारा हम सबसे बाद में लगाएंगे, बिकॉज मेरा आईलाइनर जो है वो समहाउ वो रिप हो गया था, हट गया था, तो मैंने उसको दोबारा से लगाया है. बट तब तक हम लोग हमारी ब्रॉन्जिंग कर लेते हैं, और ब्रॉन्जिंग के लिए आई विल यूज़ माई ADS द कॉपी ऑफ बाम पैलेट, और उसमें से मैं यूज़ करूँगी दिस शेड. सो आई एम गोना मिक्स दीज 2 शेड्स, और मैं इससे अपनी ब्रॉन्जिंग करूँगी. ब्रॉन्जिंग के लिए आई एम टेकिंग माई दिस एंगल ब्रश, और मैं ये दोनों को डिप करके अच्छे से मिक्स करके लगाऊँगी.
next we are moving straight up to the lipstick. For the lipstick I have two options. First is for the light version and the second one is the bold version. So if you're going for a day date or middle of the day, like the ending of the day, you can do this thing. This is a very pretty light pinky shade. This is from Blue Heaven, very nice, and this is in the shade number 9. There is no shade name. Next, for the bold thing, we'll be using this Stay Quirky liquid lipstick. This is in the shade Right Attire for Celeb Night number 12, and this is so beautiful. These both shades are beautiful and these both are going to do well with these eyes. So firstly I'll be doing this, but before putting both of the lipsticks I'm going to use lip liner. This lip liner is from Hilary Rhoda and this is a very nice affordable option. This is in the shade L12 Cherry Brown. This is a brown shade, but this is going to work very well this way. इसी से मैं अपने लिप्स को फिल भी कर लूँगी. As you can see, this lip liner is looking good on its own. This brown thing is going very well right now, but we will move to our lipstick now. I have to give a minute or maybe like 40-50 seconds to settle this, and you can see it gives a very nice pretty metallic sheen to it, that it looks so good, and this makes your lips look fuller. Like filling your lips with lip liner makes your lip fuller. Now I'll be putting my mascara to my eyes, and for the mascara I'll be using my voste mascara, and you can see I have used it so much, the printing is all gone. I'll be putting 2 layers of this. So here we have our first look with first lipstick. You can see, if you want you can make some hairstyle, but on me open hairs looks good, so I'll be having this if I'll go for something Valentine thing. Now for the second shade, this pink one, I have removed my previous shade. I tried but still I have some stain, but it's okay. इसके ऊपर ये दिख जाएगा, तो मैं ये लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ. So this is how the second shade looks on me. You can see this is a pretty pinky shade. So people who want some color on their lips, beautiful color, you can wear this, and this is going to be on your lips so long. I hope you liked the video. I hope you liked the content and my makeup tools, and if you did that, just click on it and share it with your friends. Also, you can connect with me on Instagram and LinkedIn. I am quite active there, so everything will be in the description bar, like the product details and my links. I will see you in my next video. Till then, bye.